ध्यान देऊ। हामीले के यो क्वेसनमा भन्दैछ बिन्दुहरू 0 0 4 0 र 0 2 भएर जाने वृत्तको के पत्ता लगाउनु छ, समीकरण पत्ता लगाउनु। यसको मतलब के भयो, वृत्त जुन दिएको छ त्यो कुन कुन बिन्दु भएर गइरहेछ, 0 0 भएर गइरहेछ, 4 0 भएर गइरहेछ र 0 2 भएर गइरहेछ। ये तीनों बिंदु जो है इस सर्कल को पहिरहने कि नहीं, एगो ओरिजिन पहिरहने 0 0 पहिरहने, एगो 4 0 पहिरहने, एगो कति पहिरहने 0 2 पहिरहने। ठीक है। अब हामीले थाहा छ वृत्तको साधारण स्वरूपको समीकरण के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ वृत्तको साधारण स्वरूपको समीकरण के हुन्छ त, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यसलाई मान्दिने के 1। अब यही जुन सर्कल हो त्यो कुन कुन बिन्दुबाट गइरहेछ, 0 0 4 0 र 0 2। अब यो सर्कल छ भने यसको एउटा केन्द्र होला हैन, त्यो केन्द्र हामीले के गर्नु छ, पत्ता लगाउनु छ र रेडियस पत्ता लगाउनु। समीकरण वृत्ति बिंदु से जा रहा है यानी कति के भ्यालु होते, x y के भ्यालु है, कति के भ्यालु होते, x y के भ्यालु, कति के भ्यालु होते, x y के भ्यालु। ठीक। समीकरण 1 भएको वृत्त कुन बिन्दुबाट गइरहेछ, 0 0 भएर जाने भएकोले x को ठाउँमा के राख्ने हो 0, y को ठाउँमा के राख्ने हो 0। जहाँ जहाँ x देख रहल छी वहाँ 0 रखबै, जहाँ जहाँ y देख रहल छी वहाँ कति रखबै 0 रखबै। कैला रखबै, कैला कि सर्कल जो है सही बिंदु से जा रहा है। ठीक है। अब x के जगह पर 0 के स्क्वायर, y के जगह पर 0 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू 0 प्लस 2 इंटू f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0 के स्क्वायर 0 0 के स्क्वायर 0 0 से कोनो भी संख्या गुणा करबे तो कति होते 0 होते है ना। और 0 से गुणा करबे तो कति होते 0, यानी कि सब टर्म में हम कति देख रहल छी 0 देख रहल छी, यानी कि c बराबर कितने ले लिखा ली, जोटा वैल्यू आयो c को हमरे ओके ने। अब के पता लगाउनु छ, 0 f को वैल्यू पता लगाउनु छ। ठीक छ। फेरि समीकरण 1 भएको वृत्त कुन बिन्दुबाट गइरहेछ, 4 र 0 बाट गइरहेछ। 4 0 भएर जाने भएकोले x को ठाउँमा के राख्ने हो 4 र y को ठाउँमा के राख्ने हो 0, यानी कि x के जगह पर रखबै 4 र y के जगह पर रखबै 0। x स्क्वायर कति भइहाल्यो 4 स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा 0 प्लस 2 इंटू g इंटू x को ठाउँमा के राख्ने हो 4 प्लस 2 इंटू f इंटू y को ठाउँमा के राख्ने हो 0 प्लस c को भ्यालु हामीले जस्ट निकालेको के निकालेको c इक्वल टू 0 इक्वल टू के 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 प्लस 0 के स्क्वायर 0 प्लस 4 दूनी 8g प्लस 1 को भ्यालु 0 भयो गयो प्लस इक्वल टू कति आयो g। अब यो प्लस 16 उतापट्टि गएर के भइहाल्छ 8g इक्वल टू माइनस 16, g को भ्यालु कति भइहाल्यो -16/8 भनेको -2 आयो नि। फेरि यो बिन्दु कुन बिन्दुबाट गइरहेछ 0 र 2 सेम, x को ठाउँमा के राख्ने हो 0 र y को ठाउँमा के राख्ने हो 2 राख्ने। ठीक छ। फेरि समीकरण 1 भएको वृत्त बिन्दु 0 2 भएर जाने भएकोले x स्क्वायर, x को ठाउँमा के राख्ने हो 0 0 को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y को ठाउँमा प्लस 2gx 2 इंटू g इंटू x को ठाउँमा 0 प्लस 2fy, y को ठाउँमा 2 प्लस c इक्वल टू 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 प्लस 2 जा 4f अनि c को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं कति छ 0 इक्वल टू कति आयो 4f इक्वल टू प्लस 4 उतापट्टि गएर -4 f इक्वल टू -4/4 भनेको कति आयो -1। ठीक छ। अब g को पनि भ्यालु आइसक्यो, f को पनि भ्यालु आइसक्यो, अनि त्यही भएर केन्द्र h के बराबर भ्यालु के हुन्छ त हामीले थाहा छ -g र -f बाइ फर्मुला हैन। त g को भ्यालु कति निकालेको -2 त माइनस माइनस प्लस कति भइहाल्छ 2 अनि f मा f को भ्यालु कति निकालेको छ -1 त माइनस माइनस प्लस 1
केन्द्र हाम्रो निस्किस हो कि नै 2 र 1 यसको सेन्टर कहाँ होला कति छ 2 र 1 अब के निकाल्ने हो रेडियस बराबर के हुन्छ त रुट अन्डर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c g भनेको कति निकाल्दा छ -2 को स्क्वायर प्लस f भनेको -1 को स्क्वायर प्लस c भनेको 0 -2 को स्क्वायर 4 -1 को स्क्वायर 1 4 र 1 कति हुन्छ 5 ठीक छ। अब हामीसँग केन्द्र पनि छ र रेडियस पनि छ। केन्द्र र रेडियस दिएको छ भने वृत्तको समीकरण के हुन्छ x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु त्यही भएर केन्द्र h के कति निकालेका छौँ 2 र 1 र अर्धव्यास रुट अन्डर 5 युनिट्स भएको वृत्तको समीकरण x माइनस h को होल स्क्वायर तो x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर तो y माइनस 1 को होल स्क्वायर अनि इक्वल टु r स्क्वायर रुट अन्डर 5 को स्क्वायर ले रुट गयो। अब यसलाई a माइनस b को स्क्वायर में के गर्ने ब्रेक गर्ने a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 4x प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5 और मिलाएर लेखि हाल्ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y 4 र 1 कति हुन्छ 5 इक्वल टू 5 यताको 5 क्यान्सल यो प्लस 5 यतापट्टि आयो भने के हुन्छ -5 प्लस 5 माइनस 5 0 त्यो गरेको क्यान्सल देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 जुन कि चाहिएको के हो समीकरण हो। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो बुझ्यो कि क्वेशन बुझ्यो तीनवटा पोइन्ट दिएको छ तीनवटै पोइन्टबाट यो सरकारले के गराइदिने पास गराइदिने हैन पास गराउँदै हामीले जी र एफ को भ्यालु निकाल्ने जी र एफ को भ्यालु आइसकेपछि एच को भ्यालु आइहाल्छ रेडियस को पनि भ्यालु आइहाल्छ र केन्द्र र रेडियस दिएको छ भने यो फर्मुलाबाट हामी के गर्ने वृत्तको समीकरण निकाल्ने ठीक छ।